यदि आपके एस्पिरेशंस हैं तो किसी और के भी हैं। एस्पिरेशंस को जीतने का तरीका सिर्फ मेहनत है। जो चीज़ आपको रेगुलर करनी चाहिए वो करते नहीं है। अब आप उसको एग्जाम की तैयारी में करते हैं, ये मत लिखिए कि आप ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करें। ऐसे लिखना पड़ता है ना, 250 नंबर का है, उस पर तो कोई जोर देता नहीं है। जो ऐसे आज लिखा है उसको 2 दिन बाद फिर पढ़िए, फिर आपको लगेगा कि किसने लिखा है मैंने। यदि आपके एस्पिरेशंस हैं तो किसी और के भी हैं। एस्पिरेशंस को जीतने का तरीका सिर्फ मेहनत है। Today we are honored to welcome a distinguished personality who has significantly shaped the landscape of civil services and technical education in India. I am thrilled to introduce our esteemed chief guest, Professor D.P. Agrawal, sir. I would request the founder and director of Bright Career Maker IAS Academy, Professor Sunny Kapoor, sir, to give a warm welcome to Professor D.P. Agrawal, sir. Thank you, sir. Like Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon to change the world. Today, we are gathered here for such an insightful seminar that can bring a new turn in your UPSC preparation. As our students very well know, at Bright Career Maker IAS Academy, our mission is more than just teaching. We help guide you on the right and successful path. Our facilities and experienced teachers prepare you for a better future. Today's insightful seminar can be a great opportunity in your UPSC journey. Before we proceed, I would like to take this opportunity to introduce our esteemed chief guest. It is both an honor and a privilege for me to share with you the remarkable journey and contributions of Professor D.P. Agrawal, sir, a luminary in the field of education and public service. Professor D.P. Agrawal, sir, a visionary in the field of education and governance, embarked on his illustrious journey at AMU Aligarh, where he graduated with honors in engineering in 1970. His academic pursuit led him to IIT Delhi, earning both his MTech and PhD. His tenure at IIT Delhi as a professor and a dean marked the beginning of an extraordinary career in education and research, supervising nearly 100 theses and publishing over 150 research papers. But his achievements extend far beyond academia. As the founding director of Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management in Gwalior, Professor D.P. Agrawal, sir, played a pivotal role in establishing it as a center of excellence in IT and management. Professor D.P. Agrawal, sir, has been the longest serving member and chairman of UPSC. Professor D.P. Agrawal, sir, has been instrumental in revolutionizing the working of UPSC by implementing 2 major initiatives during his role as a chairman. Number 1 was to revamp the recruitment process of UPSC by introducing aptitude tests in the examination process. Second was the introduction of e-governance initiatives at UPSC, including online application process for recruitment exams. So, Professor D.P. Agrawal sir's influence also reaches international platforms as well. Well, he has many feathers in his hat. Sir has also fostered educational and technical collaborations. His accolades, such as Engineer of the Year 2006 and Eminent Engineer 2003, are a testament to his profound impact on technical education. Dear aspirants, with a career that spans decades of dedication and excellence, Professor D.P. Agrawal, sir, stands as a beacon of inspiration and leadership. His work and achievements have not only shaped the course of civil services in India, but also have left an everlasting mark on the fabric of our nation's education system. We are extremely thankful for Professor D.P. Agrawal, sir, for accepting our invitation to address our students in person at Bright Career Maker IAS Academy, Faridabad. Having introduced our distinguished chief guest, Professor D.P. Agrawal, sir,
It is now my great honor to invite him to the dais. Sir, we are eager to hear your insights and wisdom that will undoubtedly enlighten and inspire our aspiring students. Good morning, friends. It's a great morning to be honored to be spoken so profuse words. It's always, feel very good about it. Thank you very much, Professor Kapoor, his team, young aspirants. It's almost my mission now, after I complete my tenure. Yeah, to speak to almost all young people. If given a chance, I can continue to speak to them almost every day. So when he invited me to be here, and he said they are very bright young people, I couldn't have said no. And when I look at all your faces, I find that you are so bright, so happy, and so good looking that I consider is my honor, is a very good morning when you see such young people full of energy. The question is very simple, that all of you are very enthusiasts, all of you are very bright, but the goal which we have kept for us is to be successful in civil service exam. It's an exam every year. It's an exam about everything has been said. Nothing is hidden. All old papers are available. Every detail is available. And the detail start every year from the Gazette notification, which normally comes in January, February. But if you want to see, which you must all see, the Gazette of the previous year. Have you seen that? Which is also available online. You can pick up your phone. Make it a habit to go through that. What does it give you? It gives you which candidates can appear in civil service exam. It is very simple. That any graduate, so you must be graduate from a variety of subjects. Those who attain age of 21 up to certain date, which I remember was in August end. But it could change here and there. So that means we are trying to pick up young people who are still learning, are undergraduate. You are also aware that if you are in your final year, you can appear. Is that correct, all of you? So all of you fulfill this condition? So when it says that they have to be only graduate, the exam does not differentiate between whether you are an engineer or you are a BA in economics or commerce or anything. So each of you can be successful candidate irrespective of your degree, but if you qualify this exam. Is it simple? Nothing is hidden about it. It has not changed, it will not change. And if it changes, they will announce you. So today I understand each of you fulfill the minimum condition required to appear in this exam. Correct? Okay. The second important part about is that it does not differentiate between boys and girls. It also does not differentiate between which religion you come, which caste you come, and what strata of society you come. So please be assured that when you appear any of the UPSC exam, there is no bias against you. Nobody can influence. The mightiest of the world cannot influence. They cannot make you select. Even if you say PM is your friend or he is your uncle, it will not help. Is that clear?
So please understand, don't even think that in this exam any outside influence works. Nothing works. So don't waste your time, energy. If somebody says वो करा देगा, वो करा नहीं सकता, possible नहीं है. The system has been designed in such a manner that it is impossible that you can influence. Does it give you confidence? So when you prepare, you are clear that only you, if you have done very good work, only you will be selected. It is not possible whether you come from rich family, your father is an IAS or anybody, it will not affect at all, I assure you. So whether you come from a village background which people think is inferior, which I never thought, because I grew from there. I had my school in my village, I had my school in my district headquarters. So that's how you grow in this country. This country is so large, cities are very few. All others are our district headquarters or villages. Schools have reached across the country. You all are aware today that our literacy rate is, anybody knows what is the literacy rate? Guess. About 80. Okay. Male literacy goes up to as high as 84. Female literacy about 70, 72. Now these are the kind of figures which as an aspirant should be on your fingertips. इसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. ये आपको आना चाहिए जहाँ जहाँ पढ़ते हैं. उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको. That's number one. Number two, that anybody who works hard will be selected. Whether you are a university topper or you are not a topper, you got an equal chance. But there is a difference. That also you should understand. All of it in your BA and graduation. Now when you prepare for university, your competition is very limited. For example, if you are in Delhi University, anybody from Delhi University here? Okay. Delhi University has 70, 80 colleges. So if you are in BA Economics in your top, there would be at least about 5,000 students. But if you are, say, small university like BHU, the students would be 500, 100. Like this group, a class of 120. In your top. What is the difference between when you normally pass exam and when you top the class? The difference only is that you regularly study, you devote more time. Am I right? In university most of the time you try to devote time only when exam is near. And you try to prepare for a syllabus which teacher almost tells you. Syllabus is already told you here, but your competition is very, very large. Every year about 11 to 12 lakh candidates apply. This is only application. The number of people who actually are preparing could be at least 3 times more. So at any given time in this country, all over the country, because UPSC take selection from everywhere. In the kind of support group you have here, there would at least be 1,000 support groups. If you just multiply these kind of numbers, so you know where you are. Is that correct? So, about 11,000 people of variety in nature. Some would be engineer, some would be doctors, some would be dentists, some would be science, some of them could even PhDs. Some of them who have been working and trying to come back. Lots of people who work outside, job experiences do appear. But the exam is designed for those who are qualified the undergraduate exam. And out of these 11 lakhs, in the prelim exam, roughly about 6 lakh people appear every year. So your competition is with 6 lakhs.
if I presume, if you are preparing, each of you are going to appear. And to count your appearance, if you even appear in one paper, you are appeared your one chance. Correct? So don't try to take a chance just to see what is in this exam, because chances are limited. How many chances are there? If you are general category, 6 chances. If you are OBC, you got 8 chances. And then for other reserve categories, you have more. The total reservation for OBC and SC/ST is about 47%, 47.5%. Out of the general category, 10% go for EWS. So now you can decide in which group you come and your challenges. Can you see through quickly? Can you now visualize where you are? What is your competition? It is the proportionate number. That also I can tell you. So don't think that if you are an OBC, lesser people will appear. Quite a number of people appear, almost similar in percentages as the general category. It's also true that even in the SC category, the percentages are no less. Correct? But you also know that if any of the candidate who comes under reserve category, if he scores very good, he can take a general category seat. Normally seen, about 8 to 10% seats of general category will go to very bright students of reserve category. So those who are in general category would have roughly about 40% seat available to them. It is nothing wrong. Please don't consider that it is something wrong against you. If you know the statistics of the people in this country, the OBC in the general category, the SC/STs, Bihar results have come, normally available is that they constitute 70%. You are actually lucky that a general category you get 40% seats for 30% of people. This thinking that something is given out of your thing to SC/STs and OBC is a wrong thinking. Are you aware of it? Total people in general category is not by caste anyway. General category in UPSC means a category in which you are not seeking any reservation. There are candidates who are in OBC and SC/ST. They appear without seeking a reservation. Are you aware of this? So those who are bright, they still want to be successful and want to prove that they have got it. So don't ever think that, do not get into your head that as a general category, everything is against you. In fact, it is beneficially to you. Your total number of people in the country, in the so-called, if you take a caste distribution, is only 30%. And you get 40% of seats. You are lucky people. I might see a day long down the tunnel, 10, 15 years down the line, it might be different. But today you are lucky. You get 50%, and economically weak out of them 10%. So you are doubly benefited now. So this is the situation. Any questions so far on this? If any doubts in your mind? No? Now once these fundamentals are clear to you, it all remains, you work hard, you continue to work hard and prepare. Because you have to beat this competition. As I said, if you look at the gadget, the total process is in 3 steps. Are you aware? What is the first step? Prelim exam. How many candidates appear? 6 lakhs. How many are qualified? About 15,000. This number is also fixed by what? No cutoff. Number of vacancies multiplied by about 15 times. So the moment this happens, Commission does not decide a cutoff.
The number of vacancy declared right in the beginning. They are not also hidden. So there is nothing hidden about. 6 lakhs people, 15,000. Presume there are 1,000 vacancies. They would be equally distributed in each of the category. Don't think that you would be 30 times, they would be 5 times. No, not possible. Okay? So percentages are met equally across. अब आपको क्या करना है? अब आपको 15,000 में आना है. सबसे बड़ा चैलेंज यही है. This exam is different. It's not an essay type. It's a question which is based on MSQs. Multi? Yep, you understand that. Multiple choice questions. But multiplicity is complex. It's not like a university exam. The answer is so obvious in university exam. An answer is so difficult in this exam. Because we want to really choose one who have read the subject, understood the subject, and he knows or she knows that this is the context in which the question has been asked and this is the answer. Sometimes there is not only one answer. Have you seen one of the question paper for the past year? You find them different? Okay. So this requires lot of breadth in your reading. It requires reading of a good book. Some books UPSC mention, but they are not the ultimate. But there are certain books which resource institutions have also created. They upgrade them. You can always read them because you are supported by them. But please do read text, which is good text. There are people who write books whose facts are wrong, whose language is not right. This exam requires a correct language. This exam requires your understanding of a subject in the context. And it covers a large ground, very large ground. The paper 1 in the prelim consists of knowing your country, whether geography, society, politics, anything, except there will be no question on religion, there will be no question on caste and creed, but on culture, architecture, history, there would be questions. The context would be bringing out country's vastness, country's culture which assimilate various thinkings. The questions will not be asked on divisible attitudes. So whatever happens across the society, we are divided based on caste and creed, this exam does not try to find out. There will be no question on asking your caste. They will not try to find out whether Jats are better than Rajput to defend this country. Never. They won't even mention about the caste of a king. So please do not get deterred by what you keep on reading in the newspaper or dividing people. Please don't get into it. You as candidate for civil service are going to be selected for 30 more years in your life. And many things would change. So your adaptability to change, whether it is technology, whether it is new thinking, whether it is growth of the country, whether economic development, whatever it is, are you able to think beyond? That must be your attitude. So you require reading in social science, political science, history, geography, architecture, and general arts and culture. That's the paper 1. Am I right?
In the first step, your group must have already told you, because you come from variety of subjects. How many are from sciences? Anybody engineer here? Any other profession other than humanities, social science? Banking? Economics? So you are a variety of people. So question would be such that all of you can attempt in qualifying. And therefore what people suggest, revise what you did in your school. Till you were 12th standard, they did not differentiate whether you go to economics, whether you go to philosophy, or you go to engineering. You are not differentiated. Were you? School was same. Similar syllabus. Across the country is the same element. It may not be exactly word by word, but standards are similar. So whether you come from Haryana board or you CBSC, there is no benefit either way. So those from Haryana board, how many of you are? Raise hands. How many from CBSC? Let me mention to you, there is no difference. The difference might have come because of the treatment by school teachers in your school. When sometime you are taught in an interior school, which is in a taluka or tehsil, maybe the teacher has not devoted as much time as should have been. But nothing wrong. You have qualified your 12th, you have done your graduation, you have moved from village to university or a college, and you have widened your horizon. So to appear in the first paper, your horizon should be wider. And as I said, context is important. So this context has to be today's context, which most of the people say current affair. There is no current affair. It's a pure governance, society remains same, society keep on changing, everybody knows. We might have in a Vedic culture 5,000 years ago, but today is a different culture. Nothing wrong about it. After all, there were people whose age when we became free as a country was only 42. Today is about 63. Literacy rate at the time of freedom was 17%. We are 74, 80. Now these numbers means that we have moved ahead. So please understand that we are moving ahead. Moving ahead requires adaptability to new change. So your attitude must be to accept change, not find fault with the change all the time. Those who still say old was gold, but gold remain gold. It is the young people who wear more golds, young girls are here, than the boys. It's a different today that many boys also have gold on themselves. But gold is gold, so become gold. It's not the old or the new, you must become the precious. And to you to become precious is to study. Study at least more than what you did in the university. आप proportion करिए उसको. यूनिवर्सिटी में कंपटीशन था 150 बच्चों का, अब यह 6 लाख से कंपटीशन है, तो कितने गुना आपको मेहनत करनी पड़ेगी सोचिए. 400 है, उतना समय नहीं है, घंटे तो 24 ही है ना. अब 24 घंटे में कैसे करेंगे इसको? मुश्किल नहीं है, आसान भी नहीं है. कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं इस 24 घंटे में. क्या फिक्स्ड है? कि आपको 7 से 8 घंटे तक सोना है. यदि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी से 5 ही घंटे सो रहे हैं, माई रिक्वेस्ट इज प्लीज स्टार्ट स्लीपिंग 7 आवर्स. अदरवाइज ये जो कंपटीशन है ना, 1 साल में तो होगा नहीं. कुछ चीज़ें तो आपको पता ही नहीं है अभी. तो बिना पता करे जब तक आपकी तैयारी नहीं है, इस कंपटीशन में बैठेंगे नहीं. तैयारी करेंगे तो पहला अटेम्प्ट लेने की जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि तो काउंट हो जाएगा, और काउंट होगा तो फेल होंगे. फेल होंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? घर वाले भी कहेंगे तो अरे तुम तो फेल हो गए भाई. घर वालों को बड़ा अच्छा लगता है कि आप IAS की तैयारी कर रहे हैं. बड़े फख्र से भी कहते हैं वो लोग कि भाई मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है.
बट जैसे ही आपकी फेलियर स्टार्ट होगी तो सबके सब आपसे, अरे भाई क्या है, तुम तो मेहनत ही नहीं करते थे, गपला रहे थे, मैंने तो कहा था आप पढ़ लो. दे स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट इन यू. दिस इज नॉर्मल. तो अब आपको सक्सीड करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा. कितना पढ़ना पड़ेगा इसका अंदाज़ा भी मैंने आपको दे दिया. मेरा जो अंदाज़ा है एक मोटा मोटा, 24 घंटे में से आप कुल मिला के अच्छी पढ़ाई 8 ही घंटे कर सकते हो. 7 घंटे सोना, 2 घंटे खाने में भी निकल जाते हैं. आपका नॉर्मल एक्टिविटी, थोड़ा गप्पी लगाना होता है. और कंपल्सरीली आप एक्सरसाइज करिए शाम के वक्त में, ख़ास तौर से when sun about to set. You shouldn't be in the books. You should be in fresh air, in a garden or on the road, but not on a road which is filthy. नहीं है तो मॉल में चले जाइए, वॉक करिए. Walking, half an hour exercise is a must for all of you. Ensure in the daytime you are never full. अब आपकी तपस्या स्टार्ट होती है. 7 घंटे सोना, खाना समय पे खाना, एक्सरसाइज भी करना, और 8 घंटे की सॉलिड पढ़ाई. इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे? पेट कभी नहीं भरा होना चाहिए. कभी आपने महसूस किया कि यदि आपको एक भटूरा खाना था तो उस दिन पाव नहीं खाइए, 3/4 में काम चलाइए, 2 की तरफ मत बढ़िए. It is an essential requirement for all of those who really want to do a serious study. Never fill your tummy. Nothing will happen. कुछ नहीं होने वाला है. बहुत प्रॉब्लम होती है तो थोड़े से अच्छे बिस्किट्स बगल में रख लीजिए, बट उसको भी लगातार मत खाइए. Munching is not done by you. आपको लगेगा क्या अजीब बात कर रहे हैं, बट यदि आपकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, आपका स्टेमिना नहीं बिल्ड करेगा, आपके टाइम लाइन सेट नहीं होगी, तो फिर कैसे करेंगे आप? आज तो आपने 11 बजे खा लिया, कल दोस्त आए 3 बजे खाया, क्या मतलब हुआ? आपने तो प्लान किया था 8 बजे से 1 बजे तक पढ़ेंगे, आज तो दोस्त आ गए 11 बजे खा लिया, तो गया ना मामला. अपोर्शन योर टाइम. बनाया आप लोगों ने कैलेंडर, और ये कैलेंडर है के लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा. होगा नहीं? कुछ लोगों को रात को पढ़ने की आदत है 11 बजे तक की, कुछ लोग 10 बजे सो जाते हैं और सुबह उठते हैं जल्दी. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं सब रात को 11 बजे सो, ये आपकी इच्छा है. 7 घंटे आपको सोना है, उसकी जो नॉर्मल 3 घंटे की एक्टिविटी है, हल्का ब्रेकफास्ट, लंच के वक्त पे वॉक करना, थोड़ा गप लगाना, तो कुल मिला के आपको 8 घंटे मिल रहे हैं. 8 घंटे का कैलेंडर बना लीजिए. बना लिया आप लोगों ने? सबके पास है? सबने ये सवाल पूछा कि आप सिविल सर्विस क्यों देना चाहते हैं? कभी पूछा आप लोगों ने अपने आप से? अब तो मैं इतनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, मुश्किल है. अब तो कुछ को डर नहीं लग रहा है. 6 लाख लोगों में से सक्सीड करना है. पहली बार में नहीं आएंगे, दूसरी में नहीं आएंगे, 6 अटेम्प्ट हैं. 6 का मतलब हुआ कितने साल हो जाएंगे? आप 21 के थे तो 28-30 तो हो ही जाएंगे. तब तक शादी भी नहीं होगी. जो गर्ल्स हैं उनके पेरेंट्स की चिंता शुरू हो जाएगी. तो आपके साथ ये चैलेंजेस आएंगे. दीज आर कॉल्ड डिमोटिवेटिंग फैक्टर्स. एक बार अपीयर हुए, नहीं सक्सेस हुआ, डिमोटिवेशन. पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? डिमोटिवेशन. सेहत आपकी ठीक नहीं रही, 5 साल तक कैसे करें, 30 के हो जाएंगे तो क्या करेंगे? दे ऑल आर डिमोटिवेटिंग फैक्टर. आपको इनको यू हैव टू ओवरकम देम. कैसे करेंगे? एक आध बताएं आप लोगों में से. हाउ डू यू ओवरकम दिस डिमोटिवेशन? आपको लगता है आसान है ना? लोग करते हैं. आपने सोचा है कि डिमोटिवेशन आएगा इस तरह का कोई? पहला तो आसान है, आप अपनी सेहत ठीक रख सकते हैं, दैट यू आर नॉट इल. दूसरा, रखें, बिल्कुल कैसे रखें वही बात है ना. पड़ोस में गए, उसने कहा कि तुम तो कल अच्छे बच्चे थे, अब क्या हो गया? हाँ, रखें. और ये कभी
शो न करें कि आप दुनिया से कोई अजूबा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया आज की तारीख में 30-40 लाख बच्चे बैठे हैं, इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। तो आप कोई अजूबा नहीं कर रहे हैं, यू आर फॉलोइंग ए ड्रीम। आपने निश्चय किया है, यू हैव डिसाइडेड, सो यू हैव टू रिट्रेट एवरी डे दैट्स माई ड्रीम टू गेट सक्सेस। मैं इसके स्पिन ऑफ भी आपको बता देता हूँ कि जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में जो चेंज आता है वो इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि यदि आप बाई चांस सिविल सर्वेंट नहीं बने तो जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहाँ अच्छा ही करेंगे। जितने बच्चे एटलीस्ट प्रीलिम जिन्होंने क्वालिफाई किया है सीरियसली पढ़ के, देयर पर्सनैलिटी बिकम्स वेरी वेरी गुड। क्यों? कि आपने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा है जो नहीं पढ़ा है। आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी, सोशल साइंस पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, पॉलिटिक्स नहीं पढ़ी। आई एम नॉट सेइंग कि साहब मनमोहन अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे या नरेंद्र मोदी, ये सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दीज आर नॉट इंडिविजुअल। Sometimes we do call different eras. One call is Nehruvian era because that time he was the prime minister. But what happened at that time, politically, socially, and economically? That's how you have to understand. After the public, the nation, you are being coming to govern the people of this country. The country has not changed; it remained the same. People are the same. It's the same mix. The percentage of even religion wise not changed, castes have not changed. नई कास्ट नहीं आई हैं या आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, बट एस्पिरेशंस बढ़े हैं। यदि आपके एस्पिरेशंस हैं तो किसी और के भी हैं। एस्पिरेशंस को जीतने का तरीका सिर्फ मेहनत है। तो मेहनत करना सीख लीजिए, हेल्थ को अच्छा रखिए। अब उस 8 घंटे का कैसे सदुपयोग करें, इसका एक मॉडल आपको बनाना है। इसके कारण है, पहला तो रिक्वायरमेंट ये कि आप खूब सारा पानी पीजिए, डिहाइड्रेट मत होने दीजिए अपने आप को। कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। दैट वुड रिक्वायर गेटिंग आउट ऑफ ए चेयर एवरी 1 आवर। ठीक है? सो अब 8 घंटे में क्या करेंगे? किसी ने सोचा है? किसी ने सोचा होगा? जी बताएं। जी जी, बच्चा है और कोई? ये तो करेंगे ही। करंट अफेयर को पढ़ने की ज़रूरत है क्या? When I was a young student, as small as 5-year-old, my father will travel from village and whenever he'll go to midtown, he'll bring a newspaper. वो पुराने होते थे सब। All that he wanted us to read. जब छोटे थे तो उसके बड़ी हेडिंग्स, फिर और बड़े हुए तो सेकंड हेडिंग्स, थोड़े और बड़े हुए तो थर्ड हेडिंग, और फाइनली द टेक्स्ट। तो जब तक आई केम इनटू 8th स्टैंडर्ड, आई स्टार्ट रीडिंग द टेक्स्ट। मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी करंट अफेयर पढ़ने की। ये आपके पार्ट होते चले गए। द इंफॉर्मेशन गिवन इन न्यूज़ पेपर ब्रिंग्स, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि साहब वो उत्तराखंड में टनल जो उसमें 40 मजदूर फंसे हैं उसको रटना पड़ेगा क्या? पर आपने नहीं पढ़ा है, उसको नहीं पढ़ा है ना। तो प्रॉब्लम अब ये है कि आप जो चीज़ आपको रेगुलर करनी चाहिए वो करते नहीं हैं। अब आप उसको एग्ज़ाम की तैयारी में करते हैं। इस देश के हर नागरिक को पता होना चाहिए कि इफ़ देयर इज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड, इट्स ऑल्सो रिस्की। अब जितना पैसा टनल के बनाने में नहीं खर्च हुआ वो गिर गई, उसकी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी थी या उसमें कुछ और ख़राबी थी, बट लोग तो फंस गए ना। अब उसको ठीक करने में जो समय लग रहा है, वो खर्चा हो रहा है, वो अलग से है। बट इट हैज़ नॉट बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, हैज़ इट बिकम? आपको मत
इट मैटर्स टू यू, इट डजंट मैटर टू यू. जब आप कल मोटरसाइकिल चलाने जाएंगे फिर वही जिगजैग करके चलाएंगे. यू आर नॉट बिकम, इट्स नॉट बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ टू इम्प्रूव योर पर्सनैलिटी. You try to improve your personality by preparing for competitive exam. मैं इतना बता देता हूँ कि जितने बच्चे सक्सेस पाते हैं उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बिकम देयर पार्ट ऑफ लाइफ. और बहुत आसान है ये. रोज़ आपने अखबार पढ़ा होता ठीक से, खबरें ठीक से देखी होती, तो आपको ये कष्ट होता ही नहीं. अब चंद्रायन के ऊपर आप दोबारा उसे पढ़ना शुरू करें, और जब अखबार में चंद्रायन आया आपने पढ़ा नहीं उसको. कितने लोगों ने पढ़ा चंद्रायन की डिटेल अबाउट चंद्रायन, नॉट द वेयर इट लैंडेड, हाउ इट इज़ कंपोज, व्हाट आर द एलिमेंट्स, क्या फ़र्क होता है हवाई जहाज़ में और स्पेस क्राफ्ट में. कभी आपने जानने की कोशिश की? इफ़ टुमारो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस, दे विल ओनली आस्क यू दिस क्वेश्चन, दे विल नॉट आस्क यू विच स्पॉट इट लैंडेड. तो आपकी जो समझ है, पकड़ है, द वे यू लुक एट थिंग has to be different. Different than one who is going to drive a rickshaw and the one who is going to become a bureaucrat. So half your learning now would come through daily newspaper and a magazine. And at least one book per month. कभी आपने नहीं पढ़ी ना एक महीने में किताब 300 पेज की? कितने लोगों ने पढ़ी है? वेरी फ्यू. 300 पेज, वन बुक पर मंथ फॉर ए सिविल सर्वेंट इज अ मस्ट. डेली मैगजीन लाइक इंडिया टुडे, सिंपल लैंग्वेज, more detail, more data, almost correct data in the daily newspaper, any newspaper. Normally I recommend in English newspaper and a local newspaper. Because lots of questions can be in your personality. If you come from Haryana, the questions would be more in Haryana, maybe in Faridabad, maybe a small area of that. So you should know your country thoroughly. You understand? I don't see a picture here of Gandhi, do I? There is no picture of Gandhi here. And there is a paper on ethics. There is a full topic on Gandhian thought. There is nobody in this country who is a modern thinker apart from him. Not even Vivekananda. So don't go by the discourse. I don't see a photograph of Nehru here. Civil service requires to know in depth. It does not go what happens today. You understand this? If you remember reading Discovery of India ever by Nehru, you may not require reading a history of India. Simple language written book. That's where the book helps. And the amount of effort these people have put in their lives to become successful. So spend time beyond 8 hours, not within 8 hours. Newspaper, magazine and a book. It's a must, it's a daily must. It improves your vocabulary, it improves your data, it improves your thinking, it gives you information. Nobody has been able to qualify civil service if not in the first stage, second stage, otherwise third stage they'll all caught. When they call you for personality test. So those personality which are built as you grow are successful. Those who prepare for personality development, they are not able to answer. So it's the time now. You have missed that bus. I am so surprised in the modern society, people don't read. You are on 30 groups, no use. Because the people who are sharing knowledge is as shallow as yours. And the books permit you time-tested experiences of people.
You can read book on Tata, you can read book on any of the inventor. They tell you how it takes time to reach the pinnacle, the kind of problems they faced. So important for you is, please continue reading newspaper. Try to look at as if you are a bureaucrat. You are not looking the politics part of it. I never read first page. You don't believe me, but I never read first page. Unless heavens are going to fall. I start reading, there are a number of other things to be read. There's things about culture, there's things about business, there's things about sports, there's things about development. Pick up those elements. It doesn't matter how many people are beaten on the roads in Faridabad. Yeah, collect that information that on Faridabad roads, so many people die per day. We can find it out. What kind of accidents occur? There's nothing wrong. 1 year, 2 year journey is a long journey. Today you may not be knowing, but maybe in the next 1 year you are too equipped with it. So those who are not ready today, for them this is the recipe. And if you are building along with you these kinds of strengths, you will not be in a problem. Whenever you are low, there would be a time when you are very low. Just go out. Don't be in your room. Maybe in the garden, maybe on the road. Cool off your mind. Example I can tell. Among you there could be one student who, when reads a book page, he or she assimilates quickly. There could be a candidate who requires 3 times reading. So the time management for this person and the other person has to be decided by you. I have also seen candidates who will look at book once and know what is written, because they continue to read even at the leisure time. So this practice of reading, and then what you read, one practice normally people do. Some people used to write diaries, which is not currently in vogue. Lots of people don't write diaries. But there are good people who, in the end of the day, before they go to sleep, they spend 5 hours and 5 minutes in their mind to see what have they done in the day. They want to recapitulate those hours which they spend and try to understand what they learned in those hours. जिसको हम कहते हैं ना लेखा जोखा पूरे दिन का, एक चिट्ठी आपने उसका बैलेंस शीट बनाते हैं कि मैंने 3 घंटे हिस्ट्री किताब पढ़ी, मुझे इतना ही समझ में आया, मैंने 1 घंटे पढ़ा, मुझे इतना समझ में आया. तो ये आपका एक इनवर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ यू आपको रोज़ करनी होगी. और जो कमी आज की बच गई उसको कल पूरा करना है और कल का भी करना है, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा है नहीं. 24/7 में आपका समय नहीं है, और 3 साल तक तो नहीं है. पहला अटेम्प्ट तभी दीजिए जब आपको तैयारी है. टेस्ट बहुत आसान है इसका. जितने प्रीलिम पेपर दिए हैं उनको कर लीजिए. यदि आप 80% करेक्ट करते हैं तो आप बैठ जाइए. यदि 80% नहीं करते हैं करेक्ट तो बिल्कुल मत बैठिए. डोंट हरी अप टू अपीयर इन द प्रीलिम एग्जाम. ठीक है. क्वेश्चन ये भी आता है, आपने देखा होगा कि 4 ऑप्शन है, इनको बताइए पहला कौन सा करेक्ट है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा. एक ही बात कह रहे हैं, वो 4 तरह से कह रहे हैं. एक में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, दूसरे में कम है. तो आपको समझ आना चाहिए. और इसकी प्रैक्टिस क्या है? यदि आप यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर ही पढ़ने बैठेंगे, आपने पढ़ा है कभी? एक बार घड़ी लगा के पढ़ने बैठिए पूरा पेपर, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा घंटा ही निकल गया, समझ ही नहीं आया क्या पूछा है. तो पहली प्रैक्टिस, समझने की कोशिश करिए कि उस पेपर में क्या सवाल किया है. यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम की तरह नहीं है कि 1 यूनिट में पहला आएगा. यहाँ यूनिट तो है नहीं कुछ भी. एक क्वेश्चन में 3 तरह के सवाल हो सकते हैं ना. तो क्वेश्चन पेपर को पढ़ना
और उसको समझना और उसके बाद उसको वही आंसर देना जिस कंटेक्स्ट में पूछा गया है। ये प्रैक्टिस किया कभी आपने? आसान है ना ये तो, इसमें तो बहुत मुश्किल नहीं है, इसकी तो कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। कभी आपने ये भी नहीं लिखा है कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं, ये सवाल आपसे पूछा जाता है, तो कम से कम एक पेज लिखने की कोशिश तो करिए कि आप में क्या खास बातें हैं, आप में कौन से गुण हैं, आप में कौन से दोष हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या देखते हैं भविष्य में, इसलिए आप ब्यूरोक्रेट बनना चाह रहे हैं। कभी नहीं लिखा ना आपने? आप 2 पेज कैसे लिखिए इस पर कभी, और फिर सबमिट करिए अपने यहाँ पे कि आप क्यों ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। लिख सकते हैं क्या? कितने लोग लिख सकते हैं? लिखने की कोशिश की कभी? लिख के जमा कर दीजिए, इनसे कहिए पढ़ के बताएं। देश सेवा तो नहीं है, ये मत लिखिए कि आप ब्यूरोक्रेट बन के देश की सेवा करेंगे। देश की सेवा जवान भी कर ही रहा है ना, और आज के प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक तो देश सेवा वही कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट तो बेईमानी कर रहे हैं। कह रहे हैं ना बार बार वो कि कुछ करने नहीं देते हैं, हम तो करना चाहते हैं, और फिर भी सब के सब ब्यूरोक्रेट बनना चाह रहे हैं। क्यों बनना चाह रहे हैं भाई? दुनिया ये कह रही है कि ब्यूरोक्रेट तो मिलकर करप्शन कर रहे हैं ना, फिर भी बनना चाह रहे हैं आप, तो कुछ तो है ना, वो क्या है ये समझ आना चाहिए ना। जब आप समझने लगेंगे ये चीज़ें तो आप में डेवलपमेंट आएगा। यदि आज आपको 8 घंटे जिस चीज़ को पढ़ने में लग रहे हैं, कल 6 ही लगेंगे, और मे भी 6 महीने बाद 4 ही लगेंगे। अभी 8 घंटा लगाइए उस पर, उसकी मेहनत करिए, कल वो 8 7 बनेंगे, 7 के 6 बनेंगे, और यदि आप 4 तक पहुंच जाएं तो आप समझ लें आपने बहुत अच्छा किया। ये करना है ना आपको या नहीं? तो अभी से इस पर जुटेंगे तो आप कभी, ये महीना क्या है, आप में से कितने लोग तैयार हैं कि इस बार के मई में प्रीलिम देंगे? क्यों? पहले दिया है कभी? तो क्यों लगता है आपको? आपने कोई टेस्ट दिया है? किस टेस्ट सीरीज के दिए हैं? मैं आप कोचिंग बैठे हैं यहाँ पे, आपने सबके 100 नंबर आ गए। मैंने आपको बताया कि इस तरह के कम से कम 8-10 हज़ार तो होंगे देश में, तो कितने बच्चे हो गए मिला के? 10 हज़ार तो हो ही गए ना, फिर भी चांस नहीं आएगा, तो आपको इनमें से तो पहला ही बनना है ना। द एफर्ट इज टू बिकम नंबर 1। यहाँ कहीं रख लेते हैं इसको यार। तो अब आपका एफर्ट होगा टू बी द बेस्ट, और बेस्ट आपको डिफाइन करना है अपने लिए, और वो बेस्ट की जो डेफिनेशन है वो ऊपर चलती जाएगी, और रिक्वायरमेंट क्या है, वो गोल है। अब तो मुझे 15,000 में आना ही है। यदि मुझे पक्का है कि मैं पहले 1 लाख में हूँ तो ज़रूर बैठिए, ठीक है। उसकी तैयारी का तरीका, आपने पढ़ा, हर रोज़ 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है, वो 2 घंटे का एग्ज़ाम दीजिए, खुद ही बैठिए। आपको कोचिंग में नहीं जाना है, कोचिंग में सीख के आना है, मटेरियल लाना है, डिफ़िकल्टी पूछनी है, टेस्ट तो आपको देना है। नॉर्मल जब आप टेस्ट देते हैं तो पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, उसको पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, तो उस तरह करिए, फिर चेक करिए बैठ के उसको। वो तो कोई करता नहीं है ना। पूरे 2 घंटे बैठ के कितने लोगों ने टेस्ट दिया है अलग से अपने आप? आफ्टर 1 month of study, spend out of 8 hours, 2-hour test per day, which you can design your test or you can borrow a test. टेस्ट की तो कमी नहीं है, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, पुराने पेपर्स अवेलेबल हैं, कोचिंग सेंटर्स में अवेलेबल हैं, they also give you. So every 2 hours. Then essay is very important thing. उसको तो कोई तैयार करता ही नहीं है,
नहीं करता है ना, ऐसे लिखना पड़ता है ना, 250 नंबर का है, उस पर तो कोई जोर देता नहीं है। जो ऑप्शन सब्जेक्ट है सिर्फ 500 नंबर है, उसमें लगाए रहते हैं 4 महीने 6 महीने। ऐसे में भी तो 200 नंबर आ सकते, नहीं आ सकते, पर किसी के नहीं आते क्योंकि आप ध्यान नहीं देते उस पर। तो लिखिए, एवरी डे रीड राइट, टेक ए टॉपिक एंड राइट। सो मोर यू कैन राइट इज बेटर फॉर यू। जो ऐसे आज लिखा है उसको 2 दिन बाद फिर पढ़िए, फिर आपको लगेगा कि कचरा लिखा है मैंने ये। कभी किया आपने ऐसा? देखिए, आप जो आज लिखा है 2 दिन बाद इतना ख़राब लगेगा आपको, फिर लगेगा सिर कहाँ मारो जाके। तो ये टेस्ट हैं अपने आप को जज करने के, और ईच टेस्ट गिव्स यू मोर मोटिवेशन टू सक्सीड। आज हमने ऐसे अच्छा नहीं लिखा, कल लिखेंगे, परसों लिखेंगे, काफ़ी समय हमारे पास। और जो अपेयर हो रहे हैं उनका बराबर का चांस है सक्सेस का, किसी का कम ज़्यादा नहीं है। तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है, आपका भी हो सकता है, और किसी का भी ना हो। ठीक है ना? तो पहला चैलेंज प्रीलिम है। इसका दूसरा जो पेपर है, जिसको गलती से लोग सीसेट कहने लगे हैं, वो सबसे आसान पेपर है इसमें, जिसके लिए बहुत बड़ा कन्फ्यूजन लोगों ने क्रिएट किया है। क्या है कंपोनेंट, क्या है इस पेपर के? जी, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ये पहले पेपर 1 में होता था। सो आई चेंज इट फ्रॉम पेपर देयर टू हियर, बिकॉज ये एप्टीट्यूड का पार्ट है, वो नॉलेज के पार्ट है, ये एप्टीट्यूड का पार्ट है। आप बाज़ार में गए, बाज़ार में सब्जियां देखी तो आपके दिमाग में छप गई कि कौन से पर किलो है, पर आप तो जाते नहीं हो, आपको याद भी नहीं है। उसने कहा कि साहब आपने 650 ग्राम बना, किलो था 75, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते इसको। कर सकते हो जल्दी से? हाँ, 75 रुपये किलो है, 650 ग्राम है, कितनी कीमत होगी? दुकानदार के पास समय नहीं है, वो भी आजकल कैलकुलेटर लगाता है। आप कैलकुलेट कर सकते हो? 50 रुपये। तो ये आ गया ना लॉजिक। लॉजिक इज एवरीडे एक्सरसाइज। इसमें मैथमेटिक्स नहीं है। देयर इज नो एल्जेब्रा, देयर इज नो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देयर इज नो डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर इज नो इंटीग्रल, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। तो ये मैथमेटिक्स कहाँ से हो गया भाई? इट्स अ सिंपल स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल थिंकिंग एंड इंटरपोलेशन। इसके अलावा कुछ है इसमें? लोगों ने डरा के रखा है कि मैथमेटिक्स है। कहीं है आपने देखा है मैथमेटिक्स है इसमें? बट दोज जिन्होंने साइंस अच्छी तरह से नहीं पढ़ी 10th तक कंपलसरी है, आपको पता है ना ये, और ये पूरा का पूरा 10th स्टैंडर्ड है। इस वक्त आपको मैथमेटिक्स लग रहा है, वो है ना, विडंबना है ना। ये सिर्फ 10th है। यदि आप 10th का सिलेबस दोबारा देखें तो उसमें यही सवाल है। कभी देखा आपने दोबारा से उसको? नहीं देखा, क्योंकि आप तो ये देखते हैं और डरते हैं फिर उससे। जबकि इतना आसान है ये कि 10th का साइंस उठा लीजिए, जो स्कूल में पढ़ाया था वही है बस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक मैनिपुलेशन है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं उसमें। यह है उसमें। तो मैथमेटिक्स कहाँ है भाई? सबने हाई स्कूल तो किया है ना, ज़्यादातर फर्स्ट डिवीज़न होंगे। कोई है जो फर्स्ट डिवीज़न नहीं था? ज़्यादातर होंगे, मान लेता हूँ। मान लिया सेकेंड डिवीज़न भी थे तो भी चलता है, पढ़ा तो था ना। आप में से कोई अच्छा डिबेटर था स्कूल में? 2। नॉर्मली एक्सपेक्ट करते हैं कि जो बच्चे सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं वो स्कूल में बहुत पार्टिसिपेट करते हैं। वो मॉनिटर भी होंगे, डिबेट में भी होंगे, कल्चर में भी जाएंगे। तो अब आपको असेस करना है आपको कि भाई मैंने क्या किया, क्या करना चाहता हूँ। पहले तो कुछ किया नहीं, आराम से ज़िंदगी गुजारी। अब मैंने ड्रीम रखा है बहुत ऊंचा। रखिए, बिल्कुल अच्छा है, क्यों नहीं रखिए।
बट रास्ता थोड़ा लंबा हो गया। जो आदमी रेगुलरली इसको कर रहा था उसको रास्ता थोड़ा आसान हुआ। है ना? बट सहूलियत भी उतनी ज़्यादा है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, पहले नहीं होती थी, अब है। तो ये पूरा रीजनिंग सिर्फ हाई स्कूल है। दूसरा क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। आपको याद होगा स्कूल के टीचर्स 6 स्टैंडर्ड से ही कॉम्प्रिहेंशन 3 क्वेश्चन का आंसर कंपलसरी होता था। ये 10 तक रहा, यही पूछा गया है। जिसको लोगों ने कहा तो इंग्लिश पूछी जा रही है, इसमें इंग्लिश लगती है आपको। आप में से कितने हिंदी भाषी हैं? आपको इंग्लिश नज़र आती है? स्कूल में दिया था आंसर, जब स्कूल में पढ़ा था तो कॉम्प्रिहेंशन दिए थे, नहीं दिए थे? तो अब उसमें क्या इंग्लिश आ गई भाई? यदि आप रेगुलरली एक मैगजीन पढ़ते, एक किताब पढ़ रहे होते, तो आपकी वोकैबुलरी बढ़ जाती। घर पे आप गाली देंगे, पूरा सेंटेंस बोलेंगे नहीं, आपस की बातचीत में भी शॉर्टकट मारेंगे, तो भाषा कैसे बढ़ेगी आपकी अच्छी? सबसे बड़ी परेशानी तो हिंदी भाषियों से है कि वो हिंदी बोलते ही नहीं अच्छी। उनसे कहो थोड़ा भैया लिख के ले आओ 2 पेज, नहीं लिखेंगे। कभी कोशिश किया आप लोगों ने? किसी ने हिंदी में निबंध लिखा है? पढ़ने के बाद कैसा लगा वो? अच्छा नहीं लगता ना? लिखने में बहुत मुश्किल लगता है ना? हिंदी लिखने में भी आपको प्रैक्टिस नहीं है। कितने लोगों को अच्छी प्रैक्टिस है हिंदी लिखने में? बहुत कम है ना। देखिए, हिंदी लिखना आसान नहीं है। और आपकी जब भाषा मातृभाषा है तो आपसे शब्दों का चयन भी अच्छा उम्मीद की जाती है, स्लैंग नहीं चलती है वहाँ। तो हिंदी भाषियों के लिए खासतौर से अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी किताब पढ़ें और लिखने की प्रैक्टिस कर लें। समझ रहे ना? क्या है कि जितनी वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें मात्राएं अलग से लगानी पड़ती हैं। यदि आपको छोटे ऊ की मात्रा लगानी तो हाथ को उठाना है, फिर ऊ लगाना है। अब लहसुन लिखेंगे तो सा पे छोटे ऊ की मात्रा लगेगी ना, जब सा लिखेंगे तो फिर दोबारा से हाथ नीचे करके ऊ लगाएंगे, इसमें समय लगता है। गार्लिक में वर्ड्स ही हैं खाली वो। यदि लहसुन खाली लहसन होता तो काम चल जाता। तो अंडरस्टैंड करें, ये खराबी नहीं है लैंग्वेज की, बट लैंग्वेज को लर्न करने का यही तरीका है। लोग बहुत सारा क्रिटिसिज्म करते रहते हैं कुछ भी, बट आप ये तो सोचो कि आप कितनी मेहनत करते हो हिंदी के साथ में। कब से हिंदी का अच्छा अखबार नहीं पढ़ा? कब से नहीं पढ़ा? किसी ने हिंदी का अच्छा अखबार पढ़ा है? न भारत टाइम्स, दैनिक भास्कर फॉर एग्जाम्पल, नहीं पढ़ा है ना? तो भाषा कैसे बढ़ेगी आपकी? वोकेबुलरी कम है आपकी। आपने कोई अच्छा नॉवल भी नहीं पढ़ा। हिंदी में पढ़ा है कोई अच्छा नॉवल? जो हिंदी भाषी है उनमें से किसी ने हिंदी में एक अच्छा नॉवल पढ़ा है? नहीं ना? तो ये तो करिए ना भाई। मुझे बहुत ताज्जुब होता है कभी कभी, क्या शिक्षा में हो गया है। मैं तो गांव के स्कूल में पढ़ा, उस वक्त भी हिंद पॉकेट बुक्स की किताबें आती थी, और मुझे याद नहीं है कि एक छोटी लाइब्रेरी हमारे यहाँ थी, 100-150 किताबें थी, मैंने सब पढ़ डाली हूँ। दे वर ऑल अब्रिज वर्जन ऑफ द बिगर नॉवल। तो कंटेक्स्ट पता लग गया आपको। अब जब दोबारा पूरा नॉवल पढ़ने बैठे तो समझ में आने लगा। मुझे पता नहीं आप कितने लोगों को मुंशी प्रेमचंद पढ़ा है? आपने पढ़ा है? किसी ने एक कहानी पढ़ी होगी। कोई नॉवल पढ़ा है? पूरा नॉवल नहीं पढ़ा ना? आप पढ़िए ना, गबन इतना मोटा है, गोदान इतना मोटा है, तब तो आपको समझ आएगा ना कि उन्होंने क्या सामाजिक चरित्र वहाँ बताया है। मैं इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, हिंदी भाषी लोग ये मत समझें कि आपके कोई विरुद्ध है। आप अपने विरुद्ध हो, यू आर अगेंस्ट योर सेल्फ। अपने आप को अननेसेसरीली नेगेट कर रखा है। मैं जितनी बात आपसे कही, मैं पूरी बात हिंदी में कर सकता था। पहले तो हिंदी सीखी थी ना मैंने। आप सबने मातृभाषा सीखी है, लिटरेचर की कोई कमी नहीं है। लकीली आपको इंग्लिश में आती है, तो जब इंग्लिश आती है तो हिंदी में लिख लीजिए उसको। मैं जब पहली बार यूनिवर्सिटी गया तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश में गया सीधे। यूनिवर्सिटी में हिंदी नहीं पढ़ाते थे,
तो क्या करना पड़ता है उस वक्त? आप कुछ चीज़ें रटना शुरू करिए, धीरे धीरे लिखिए उनको, प्रैक्टिस हो गई. इट टुक मी ओनली 3 months. एनुअल एग्ज़ाम होता था और केमिस्ट्री में बहुत कुछ लिखना पड़ता था. तो अब क्यों नहीं कर सकते आप? हम अभी भी अंग्रेजी बोलते वक्त मातृभाषा से ट्रांसलेट करते हैं. हार्डली एनी ऑफ अस थिंक इन इंग्लिश. तो एक्चुअली हम सभी हिंदी भाषी हैं, या मलयालम है, तमिल है, जहाँ के भी हम हैं. बट हमें प्रैक्टिस हो गई है क्योंकि बुक्स वही पढ़ी, तो उसमें क्या बुराई है? तो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, अच्छा नॉवल पढ़िए. आप ये भी नहीं बता सकते आजकल के अच्छे लेखक हिंदी में कौन है. नहीं पढ़ी आपने मैगजीन कोई? कितने लोग जानते हैं कादम्बिनी एक मैगजीन होती है? आप कभी पढ़िए, यदि आप कंपटीशन बैठे हैं तो कभी तो पढ़िए. इससे भाषा आपकी बढ़ेगी. जिस तरह से इंडिया टुडे में कुछ चर्चा होती है, वहाँ भी कुछ विषयों पे चर्चा है, सामाजिक सोशोलॉजी की, पॉलिटिकल की चर्चा है. तो आप पढ़िए तो भाई. द थर्ड कंपोनेंट इन द सेकेंड पेपर इज ओनली एथिकल बिहेवियर एंड एप्टीट्यूड. क्या आपकी सोच डिफरेंट है? आपको डिस्क्रिशन है कि कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए, कौन सी दूसरी करनी चाहिए. हाउ डू यू डेमोन्स्ट्रेट योर ऑनेस्टी? यू शुड बी ऑलवेज ऑनेस्ट फॉलोइंग द रूल. यही हो जाता है ना. यदि समाज को काम करना है तो रूल ऑफ लॉ शुड अप्लाई. तो बिहेवियर कैसा हो, डिस्क्रिशन कैसे करें, ऑप्शन कैसे चूज करें, ये थर्ड कंपोनेंट है उसका. तो ये तो आप धीरे धीरे सीखेंगे. इसकी तैयारी तो होगी नहीं ना, या होगी? तैयारी के लिए केस स्टडीज़ दी हुई हैं, आपने पढ़िए और देखिए कैसे उसने उसको सोचा है. आपकी सोच अलग हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी वही सोच हो. समझ रहे हैं ना बात? मेरे ख्याल से आज के लिए काफ़ी है, फिर कभी देखेंगे, समय होगा. बट मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं. आपको फिज़िकली मेंटली तैयार रहना है, डिमोटिवेशन को दूर रखना है. जब परेशानी आ जाए तो बाहर आ जाइए, ग्रुप में बात करिए. जो आपसे सबसे ज़्यादा स्नेह करता है उसके पास जाइए. ईच ऑफ योर कंपटीटर, प्रेम जरूर है, मित्र ज़रूर हैं, बट कंपटीटर हैं. जब आप लो होंगे वो आपकी हेल्प नहीं करेंगे. हो सकता है माँ आपकी मदद करे, पिताजी तो नहीं करेंगे. वो तो पहले ही कह देते हैं कि मुझे तो पता था तू नहीं कर सकता था. बट कीप फेथ इन यू. राइट एन essay, why do you want to become you civil servant. Also write down your strength, weakness and challenges. Make your calendar. Keep an 8-hour serious study. Read every day in a newspaper and a magazine. Those who are Hindi, please read good Hindi magazine novels. Learn to write because it takes time by nature to write in Hindi. क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे दिक्कत होती है लिखने में. तो प्रैक्टिस करिए, अच्छा लिखिए, साफ लिखिए. कोई टीचर जो एग्जामिनर है ना, उसको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा लिखेंगे तो पढ़ लेगा, तो लिख देगा, नंबर देगा. यदि आप उसको घसीट के लिखेंगे तो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं. राइट वेल, राइट गुड, राइट सिंपल, you would be successful. Thank you very much.